नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की आज 159वीं जन्म जयंती है, जिसके चलते जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दरअसल महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर को कई भेंट दी है और खंडेराव मार्केट भी उन्हीं में से एक है। बीते कई सालों से खंडेराव मार्केट वडोदरा शहर में कार्यरत है, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ही भेंट है, जिसके चलते आज खंडेराव मार्केट के व्यापारियों की ओर से सर सयाजीराव गायकवाड़ की जन्म जयंती को मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत खंडेराव मार्केट के व्यापारी पालिका कचहरी के परिसर में इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर केक काटकर सर सयाजीराव गायकवाड़ की 159वीं जन्म जयंती मनाई। અમારો સર સયાજીરાવનો આજે જન્મદિવસ જન્મ જયંતિ ઉજવાય છે, અમે પણ ઉજવીએ છીએ। અમે એટલે બધું ગૌરવ અનુભવીએ છીએ કે અમારી વડોદરા શહેર ખંડેરાવ માર્કેટ 5 પેઢી આજે 5મી પેઢી એ ગાડી ધંધો કરે છે, જેનું ઉદ્ઘાટન મહારાણી સ્વર્ગવાસી ચિમનાબેન એ કરેલું અને આ માર્કેટ અમને ખુલ્લી આપેલી। એની શરૂઆત થઈ હતી 1800 કે ઉપર, જેને બાંધતા ઓછા 25 વર્ષ લાગ્યા હતા, પણ આ માર્કેટ જે બની હતી ને અમારા માટે બની હતી ખંડેરાવ માર્કેટ એનું નામ। આ માર્કેટની વિશેષતા શું છે? આજે મોલ આવે છે, તે મોલની અંદરથી બધી વસ્તુ એમને મળી રહે છે, પણ તે જન્મની મળે છે પણ મરણની મળતી નથી। અહીં ગાડી એવી વ્યવસ્થા છે માર્કેટની કરે સર સયાજીરાવે કે જન્મથી માંડીને માણસ જન્મે ત્યારથી માંડીને મરણ સુધીની તમામ અનાજ પાણી શાકભાજી ફળફળાદી બધું જ અહીં મળી જાય। આવું કોઈ મોલ બીજી કોઈ જગાએ નથી ને આ આર્કિટેક્ટ પ્રમાણે બેંગ્લોરની માર્કેટ, મહારાષ્ટ્રની અંદર કાપડ માર્કેટ, આ બધી માર્કેટની સ્થાપના થયેલી હતી। એટલે આ માર્કેટની વિશેષતા છે ને અમે ગર્વ અનુભવ્યો છે કે આજે અમારી 5મી પેઢી પણ આજે અહીં ગાડી ધંધો કરે છે। એવો સર સયાજીરાવ સ્વર્ગાસ્થીમાંથી અમે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ। साल 2017 में डभोई के नांदोदी भागोल में जमाल मिर्जा की ओर से एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उस बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी और बीते कई सालों से ये केस कोर्ट में चल रहा था। अब आखिरकार कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया और आरोपी को कड़ी सज़ा सुनाई। ऐसे में इस पूरे केस को लेकर वकील नीरज जैन की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। 2017ની સાલમાં ડભોઈમાં નાંદોદી ભાગોળ પાસે એક પાણીપુરીવાળા રહેતા હતા। એની 5.5-6 વર્ષની દીકરીને આંબલીની લાલચ આપી એક જુમ્મા દાદા ઉર્ફે જમાલભાઈ મિર્ઝા એને ઘરમાં બોલાવે છે અને એની સાથે બળાત્કારનો પ્રયત્ન કરે છે અને બળાત્કાર કરે છે એ પ્રકારની ફરિયાદ આ દીકરીની માતાએ નોંધાવી હતી। નોંધાવ્યા પછી એ કેસ ચાલી જતા એમાં ફરિયાદી તરફે અમે હાજર હતા, સરકારી વકીલ તરીકે NU મકવાણા વકીલ હાજર હતા। આ કેસ આખો ચાલી ગયો। આજે ચાલી ગયા બાદ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટ, સ્પેશિયલ પોક્સો જજ પંચાલ સાહેબ દ્વારાની કોર્ટમાં આરોપીને અલગ અલગ કલમોમાં કુલ 45 વર્ષની સજા અને જો સામૂહિક એક સાથે ગણીએ એક સાથે ભોગવવાની તો 20 વર્ષની સજા અને આશરે 3 લાખ રૂપિયા જેટલો દંડનો સજા કરી છે। અને જો આ પૈસા ના ભરે તો એની અલગ એમાં કેટલાક દિવસની સાદી કેદી, પેલામાં સખત કેદની સજાનો હુકમ કર્યો છે। આ કેસ ચાલતા જે કંઈ ડિટેલ આવી એના અનુસંધાનમાં વિદ્વત્તાભર્યા ચુકાદામાં 152 પાનનો જે ચુકાદો આપ્યો છે, ચુકાદાની અંદર જોઈએ તો નામદાર કોર્ટે એવું પણ નોંધ્યું છે કે આવા ગુનામાં ઓછી સજા કરવી એ બહુ અતિ ગંભીર ગુનો છે, જેથી વધારેમાં વધારે સજા એને કરવી જોઈએ અને એને ધ્યાનમાં રાખી નામદાર કોર્ટે આ સજા કરી છે। सावली की गंगोत्री अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साइंस फेयर का आयोजन करवाया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया।
बीते कई सालों से सावली की गंगोत्री अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साइंस फेयर का आयोजन करवाया जाता है। उसी के तहत इस साल भी सावली की गंगोत्री अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साइंस फेयर का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्कूल के पहली से 8वीं कक्षा के 55 जितने छात्रों ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स तैयार किए। दरअसल बाल वैज्ञानिकों की ओर से अपने प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी मुहैया करवाई गई। इस मौके पर स्कूल के आचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्रा और अभिभावक उपस्थित रहे। वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आज रोज गंगोत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा आयोजित द कन्जर्वेशन ऑफ द लाइफ साइंस, खरेखर कन्जर्वेशन ऑफ लाइफ साइंस प्रोजेक्ट करवा पाछळनो अमारो हेतु ए ज हतो कि खरेखर कोरोना समयनी अंदर जे बच्चाए 2 वर्ष सुधी जे घरनी अंदर रहीने एनी अंदर जे एनर्जी सुसुप्त शक्तिओ जे हती एने बहार लाववा माटेनो अमारो एक प्लानिंग हतो। ए प्लानिंग आज अमारा बच्चों द्वारा टोटली 45 प्रोजेक्टो हाईलाइट करवामां आव्या छे। एमां खास करीने जे स्वामीजीना स्वप्ननुं सावली जे स्मार्ट सिटी एमनुं जे स्वप्न हतुं ए अमारा बच्चाए खरेखर डिस्प्लेनी अंदर मूक्यो छे अने खरेखर एक नोंधनीय छे। एनी साथे साथे सेव द अर्थ, सेव द वॉटर, फ्लोर मिल, अर्थक्वेक ए टाइपना अलग अलग प्रोजेक्ट बाळको द्वारा करवामां આવ્યો છે અને અમારા પ્રોજેક્ટને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। અમારા પ્રેસિડેન્ટ છે, સેક્રેટરી, અમારા કલીગ છે, પ્રિન્સિપાલ મેડમોનો અને પેરેન્ટ્સોને जस અને धन्यवाद पाठवू છું। हेलो, माय नेम इज़ भाग्येश। आई एम स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट सावली। उसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे दिन का वक्त लगा है। इस सारे प्रोजेक्ट को बनाने में हम सबका बहुत योगदान है। इस सारे क्रेडिट मेरे माता पिता, वडीलों और शिक्षकों को जाता है और मेरे प्रिंसिपल सर को जाता है। तिलकवाड़ा से चित्राखड़ी के बीच में गैरकानूनी तौर पर लकड़ी की हेराफेरी की वारदात उजागर हुई है। दरअसल तिलकवाड़ा पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर एक आइसर टेम्पो को पकड़ा गया था, जिसके तहत 2 शख्स की गिरफ्तारी तिलकवाड़ा पुलिस ने की है और 3,60,000 का मुद्दामाल भी पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। अब इस मामले में तिलकवाड़ा पुलिस की ओर से वन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जूनागढ़ के केशोद के करेणी गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक फार्म हाउस में अचानक ही हिरन देखने मिला था। ऐसे में इस मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई थी और वन विभाग की ओर से हिरन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। આપણા વિસ્તારમાં એ ક્યારેક જ જોવા મળે ને એકલું હતું ત્યાં દયાભાઈની વાડીએ આવીને એને ગૌશાળામાંથી રેસ્ક્યુ કરી ને વન વિભાગના સ્ટાફ લઈ ગયો હતી। PIVR वानिया की अगुवाई में गोत्री इलाके में कल फूड पेट्रोलिंग आयोजित हुआ था। दरअसल पुलिस के कर्मचारियों की ओर से गोत्री तालाब से लेकर अंबिका नगर तक फूड पेट्रोलिंग किया गया और इस रास्ते में मंदिर में पुलिस के अधिकारियों ने बुजुर्गों के साथ बातचीत कर उनके हालचाल पूछे, तो वहीं ट्यूशन क्लासेस जा रही बेटियों के साथ बातचीत कर पुलिस ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उन्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। इसके अलावा आने वाले वक्त में जिन बच्चों के इम्तिहान आने वाले हैं उन्हें पुलिस के कर्मियों की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई और साथ ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन भी पुलिस की ओर से मुहैया करवाया गया। कोई मजबूरी कर कोई हैरानगति कर देવું નથી ને હોય તો અમારા ધ્યાન પર લાવવાનું કોઈ પણ પ્રકારનો આપણે ડરવાનું નહીં। પોલીસથી નહીં, પોલીસ તમારી મિત્ર છે, બરાબર? પોલીસ તમારી મિત્ર સાથે જ હોય। એ તો આપણે ખોટી માન્યતા હોય કે ભાઈ પોલીસ પાસે ના જવાય, પોલીસ તો આમ કરે, કંઈ ના હોય। પોલીસ પણ એક માણસ જ છે, બરાબર? એ તમારી હેલ્પ માટે છે। પોલીસ કોના માટે છે કે જે ગુંડા હોય, જે मतलब कि गैरकायदेसर प्रवृत्ति करता हो एना माटे पोलीस कड़क हो, परंतु सामान्य प्रजा हो, आम प्रजा हो, तमारा जेवा बाळको हो एना माटे तो पोलीस बहुत सारी हो, बराबर? तो कोई तमे तारे वांधो नहीं, माफ करना पर चिंता नहीं। कोई तमने हैरान करती परेशानी कोई डिस्टन्स एवं कई है कि अँ कोई टपोरी जेवा कोई करता हो, कोई गुस्सो करता हो, कोई डिस्टन्स करता हो, जो अपने ध्यान पर है कि क्या हो तो हमारा ध्यान पर लाभ, बराबर? बाकी घनी वखत कि आपणे कोण पोलीसना लफड़ा पड़े मारो तो विचार करता। गुजरात राज्यना मान्य DGP साहेब श्रीए साजना 5 થી 7 दरमियान
ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવા માટે સૂચના આપી હોય, જે અન્વયે વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનર માન્ય ડૉક્ટર શમશેરસિંહ સાહેબ શ્રીનાઓએ તમામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોને સાંજના 5 થી 7 સુધી ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવાની સૂચના આપી, જે અન્વયે આજે અમે હું તથા મારા ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારીઓ અંબિકાનગરથી લઈ અને ગોત્રી તળાવ સુધી ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું, જે દરમિયાન અમે રૂટ ઉપર આવતા ટ્યુશન ક્લાસીસની ખાસ વિઝિટ કરવામાં આવી અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ભણતા બાળકો સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં અને ખાસ કરીને ટ્યુશન ક્લાસની બાળાઓ સાથે વાર્તાલાપ કરી અને એમને કોઈ પણ પ્રકારની મતલબ કે કોઈ આજુબાજુ કોઈ ન્યુસન્સ હોય, કોઈ પજવણી કરતા હોય એ અંગે પૃચ્છા કરવામાં આવી અને આગામી દિવસોમાં જે 10મા અને 12માની એક્ઝામ આવતી હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટ્રેસ ન લેવા અને શાંતિથી મતલબ કે સારી રીતે વાંચન કરવા અને સ્ટ્રેસ રહિત થઈ અને એક્ઝામ આપવા માટે પણ એમને ખૂબ શુભકામના પાઠવવામાં આવી. સાથે સાથે રસ્તામાં આવતી લારીઓ પર પણ જે બહેનો શાકભાજી ખરીદી કરવા માટે આવે છે એમની પણ વિઝિટ કરી અને એમની સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં આવે અને કોઈ આજુબાજુ કોઈ ન્યુસન્સ છે કેમ એ અંગે પણ પૃચ્છા આપવામાં આવે. સાથોસાથ રૂટ પર આવતા જે સોસાયટી તથા મંદિરો પર જે સિનિયર સિટીઝન જ્યાં બેઠેલા હોય તેમની પણ વિઝિટ કરી અને એમની મતલબ કે હાલચાલ પૂછવામાં આવે. जाफराबाद के फाचरिया से टिम्बी की ओर की जो सड़क है वो बीते कई वक्त से खस्ता हाल स्थिति में है। हालांकि बार बार इस सड़क को बनवाने की मांग स्थानीयों की ओर से की गई है, लेकिन अभी तक इस सड़क की मरम्मत के मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है और खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके अलावा गाँव में बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी इस सड़क की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। गाँव के निवासी काफ़ी परेशान हैं और बार बार इस मामले को प्रस्तावित करने के बावजूद भी इस सड़क के मामले में कुछ नहीं होने से गांव के निवासी काफ़ी रोष में दिख रहे हैं। ऐसे में स्थानीयों का इस मामले में काफ़ी रोष है और उनका ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक करने के मामले में कुछ किया नहीं गया तो फिर उन्हें कोई कदम उठाना पड़ेगा। आ તમે જોઈ શકો છો આજે ફાસરિયાથી ટીમ્બી રોડ છે એ એકદમ બિસ્માર થઈ ગયો છે. ઘણા વર્ષોથી લોકો વાતો કરે છે કે આ રોડનું કામ મંજૂર થઈ ગયું છે, પણ હજી સાઈડું સાફ થયું છે. ખાલી જીસીબી હાલ્યું પણ એ પણ મહિનો દિવસે એક કામ પૂરું કર્યું છે. ખાલી હજી પણ રોડનું કાંઈ કામ શરૂ નથી થયું. અમે રિક્ષાવાળા છીએ, અમારે અહીંથી ઘરે જવું હોય આખો દિવસનો એક ફેરો થાય છે, ખાલી એવો રોડ છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ફાસરિયાથી ટીમ્બી લગીનો રોડ હજી સુધી એનો કાંઈ કામગીરી ચાલુ થઈ નથી, બરાબર. પછી ઘણા વર્ષોથી લોકો વાતો કરે છે કે મંજૂર રોડ થઈ ગયો છે. જો આ તમે રોડ જોઈ શકો છો, આમાં કાંઈ પણ જાતની હજી કાંઈ વ્યવસ્થા થઈ નથી. સાફ સફાઈ કરી લોકો વયા જાય છે. शहर के तांदरजा इलाके में सहकार नगर की ज़मीन का मुद्दा बीते कई वक्त से चर्चा में है। दरअसल सहकार नगर की ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बनाने की कामगिरी को शुरू करने की घोषणा मेयर के यू रोकड़िया की ओर से की गई है। हालांकि स्थानीयों का ये कहना है कि ये सिर्फ घोषणा है, अभी तक उन्हें आवास मिलने के मामले में कुछ नहीं हुआ है। जबकि साल 2016-17 से ये मुद्दा चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक लोगों को आवास नहीं मिले हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर मेयर के यू रोकड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास लोगों को मुहैया हो पाएंगे। वडोदरा महानगरपालिका में 2016-17 एक टेन्डर थयुं हतुं ने सहकार नगरना 1400 जेटला झूंपड़ाओने तोड़ीने त्यां आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बने ए दिशानी अंदर कॉर्पोरेशने काम कर्युं हतुं। क्रमशः त्यां तळावनी जग्याने लईने कोर्ट विवाद थया हता अने कोर्टमांथी पण हवे चुकादो आवता आगळनो रस्तो क्लियर थयो छे ने सहकार नगरमां दरेक गरीबने आवास मळे ए दिशानी अंदर जे तळावनी जग्या अने आजुबाजु मार्जिननी जग्या छोड़ीने खूटती जग्या ए कॉन्ट्राक्टरने आपीने पूरुं प्रीमियम भराईने हवे आवास योजनानुं काम शरू कराय ए दिशानी अंदर वडोदरा महानगरपालिकाए निर्णय कर्यो छे। आगामी दिवसोनी अंदर स्टेन्डिंगमां काम आवशे, स्टेन्डिंगमां मंजूर थशे, सामान्य सभामां काम आवशे, सामान्य सभामां मंजूरी मेळवीने सभासदोनी सहमति मेळवीने आगामी दिवसमां त्यां काम चालू करवामां। कल देश के 5 राज्यों में चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई और 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज की गई, जिसके चलते जाफराबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस जीत का जश्न मनाया गया।
5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत के चलते विभिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस जीत का जश्न मनाया गया। ऐसे में अमरेली के जाफराबाद में कोली समाज के प्रमुख और भाजपा के अग्रणी करणभाई बारैया की ओर से पटाखे जलाकर इस जीत को मनाया गया, तो वहीं जाफराबाद के सर्कल पर भाजपा की खुशी के चलते कार्यकर बड़ी तादाद में उमड़ पड़े। इसके अलावा टिम्बी गांव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर पटाखे जलाकर इस जीत की खुशी मनाई और साथ ही वंदे मातरम के नारे भी लगाए। જય શ્રી રામ। હું હિન્દુ વીરેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ જાડેજા, ગામ જાફરાબાદ। હાલ આજે 5 રાજ્યના ચૂંટણીનું પરિણામ અત્યારે ચાલુ છે। ભાજપ સરકાર, હિન્દુ ભગવાધારી સરકાર અત્યારે બહુમતીથી આગળ વધી રહી છે, તો ભવિષ્યમાં એમનું શાસન રહે અને સર્વ સમાજનું અને ભારતનું પ્રગતિનું કામ કરતી રહે। જય શ્રી રામ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય। મારું નામ કરણભાઈ ભૂપણભાઈ બારિયા, જિલ્લો અમરેલી। ત્યાં 5 રાજ્યોનું જે આપણે પરિણામ આવ્યું હાલે ચાલુ છે, 5 રાજ્યની ચાલુ છે। એમાં યુપી, પંજાબ, ગોવા, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર એ બધામાં બહુમતી આવે એવી પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને, ભાજપની બહુમતી આવે તો આશા રાખીએ આપણે વધારે બહુમતી આવે 5 રાજ્યોની એ આશા રાખીએ આપણે। ભારત માતાની જય। रंगों का उत्सव होली अब नज़दीक है और पुराणों में भी ये जिक्र है कि होली के दरमियान पलाश के फूलों से होली खेली जाती है। हालांकि होली का त्यौहार आते ही पलाश के पेड़ पर पलाश के फूल दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अब जब होली का त्यौहार नज़दीक है तब पलाश के आकर्षित करने वाले फूल पेड़ पर देखने मिल रहे हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।